Hello everyone. So today we will be understanding the concept of consumer equilibrium. So before we start with the topic, the first thing that need to strike in our mind is who is a consumer? So basically consumer is a person who buys goods and services for satisfaction of wants. The objective of a consumer is to get maximum satisfaction from spending his income on various goods and services given the prices. So basically a person who is responsible for buying the goods and services is known as a consumer. And now why do he buy goods and services? So the reason behind buying goods and services is simply that he want to satisfy his wants. So the next thing that we need to understand here is what do we mean by the term wants? So basically there are three terms, that is need, another term is wants, and the third term is desire. So need refers to those items which are essential for our well-being and our survival. जैसे कि water, air. So these all are our needs. Wants क्या होते हैं? Wants वो चीजें होती है जो हमारी quality of life को enhance करें. For example, luxury items. We want to travel. That is not a need. अगर हम travel नहीं करेंगे, it is not like that I won't be able to survive that. But it is simply my want. And the third term is desire. So basically, a big difference between wants and desire is their affordability. There are items which we may desire, but we won't be able to fund their purchase. Basically, हमारे पास desire हम वो चीजें करते हैं जो हम चाहते हैं, but हम उन्हें afford नहीं कर सकते. Right? So that those items are referred to as the items which we desire. So the next topic under consumers equilibrium is utility. And before we move towards moving on, we have the concept of utility. So the first thing is what is utility? So utility basically refers to the realized satisfaction to a consumer when he is willing to spend money on a stock of commodity which has the capacity to satisfy his wants. Now, what does this mean? So basically कहते हैं कि जब भी अब कंज्यूमर जब भी किसी कमोडिटी के ऊपर अपने पैसे स्पेंड करता है तो उससे उसे कुछ सेटिस्फैक्शन मिलती है एंड दैट सेटिस्फैक्शन इज नोन एज यूटिलिटी. राइट. एग्जाम्पल, जब भी हम खाना खाते हैं, खाना कंज्यूम करने से जो भी हमें न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं दैट इज रेफर टू एज, तो वो कितने न्यूट्रिशन हमें मिला उस खाने से, दैट इज नोन एज आवर यूटिलिटी. Another thing that we need to focus on is what is realized satisfaction. So basically दो चीजें होती हैं, एक होता है realized satisfaction और another term is expected satisfaction. So realized satisfaction जो satisfaction after consumption मिलती है that is known as realized satisfaction. और expected satisfaction होती है when the commodity has not been purchased but the consumer is willing to purchase it, that is known as our expected satisfaction. Right. So understand the term of total utility and marginal utility. Let's first go towards this numerical example and then we will come back to these definitions. So let's see, focus on this table. So focusing on this table, we have the first column representing quantity of a commodity, say X. Then we have total utility that we derive from this commodity. And then we have the marginal utility that we derive from this X commodity, right? So let's understand this concept in depth. So the first thing is that when I am consuming 0 units of X, तो जब मैं गुड को कंज्यूम ही नहीं करूंगी, विल आई गेट एनी सेटिस्फैक्शन फ्रॉम देम? मुझे कोई सेटिस्फैक्शन मिलेगी उससे? बिल्कुल भी नहीं. इसलिए उसकी टोटल यूटिलिटी 0 होगी. राइट. देन व्हेन आई हैव 1 यूनिट ऑफ एक्स, तो जब मेरे पास 1 यूनिट ऑफ एक्स होगा, लेट्स से कि मेरे को जो उससे सेटिस्फैक्शन मिली, दैट सेटिस्फैक्शन इज 8 यूटिल्स. राइट. So the term for measuring the utility is utils, right? So let's say I am deriving 8 utils, right? And the marginal utility will also be 8. Let's understand this. Then let's say कि I am consuming 2 units of X.
तो उससे मेरे को जो टोटल यूटिलिटी मिल रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 14 and marginal utility is coming out to be 6. Now how did we get this? So जब मैंने एक ही यूनिट कंज्यूम किया उससे मेरे को सेटिस्फैक्शन जो मिली 8 मिली, और जब मैंने 2 यूनिट्स कंज्यूम करे ऑब्वियसली मेरी सेटिस्फैक्शन ऑन कंज्यूमिंग मोर यूनिट्स, मेरी सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करेगी. सो मेरी सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होके 2 यूनिट्स कंज्यूम करने से, दोनों यूनिट्स को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फैक्शन मिली दैट इज कमिंग आउट टू बी 14, राइट. एंड एक एक्स्ट्रा यूनिट जब मैंने 1 से 2 पर शिफ्ट किया, सो उस एक एक्स्ट्रा यूनिट से मेरी जो सेटिस्फैक्शन में इंक्रीमेंट आया दैट इज इक्वल टू 14 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 6. दैट इज माय मार्जिनल यूटिलिटी. सो बेसिकली टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि टोटल सेटिस्फैक्शन जो हमें मिलेगी फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स. जैसे कि यहाँ पे हम 2 यूनिट्स कर रहे हैं कंज्यूम, तो 2 यूनिट से मेरे को जो सेटिस्फैक्शन मिली दैट इज 14. अगर मैं 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रही हूँ तो उन 3 यूनिट से जो टोटल सेटिस्फैक्शन विच इज 19 दैट इज माय टोटल यूटिलिटी. देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से जो मेरी यूटिलिटी में इंक्रीज आया दैट इज नोन एज माई मार्जिनल यूटिलिटी. जैसे यहाँ पे 1 से 2 यूनिट्स कंज्यूम किए तो मैंने एक यूनिट इंक्रीज किया, सो वो कितना, उससे एक यूनिट इंक्रीज करने से उस एक्स्ट्रा यूनिट से कितनी सेटिस्फैक्शन मिली दैट इज 6 विच इज 14 माइनस 8. सिमिलरली जब मैंने 2 से 3 यूनिट्स तक शिफ्ट किया तो उस एक एक्स्ट्रा यूनिट से मेरा कितना इंक्रीज आया दैट इज 19 माइनस 14 विच इज 5 एंड दिस इज माय मार्जिनल यूटिलिटी. सो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन दैट वी गेट फ्रॉम कंज्यूमिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, and total utility is the utility or satisfaction that we get from all the units of a particular commodity that we consume. So now let us go back to the definition. So total utility is the sum of utilities that a consumer derives from the consumption of a certain amount of a commodity. So हम जब certain amount of a commodity को consume करते हैं उससे जो उसे utility मिलती है that is what total utility is. And total utility can also be calculated by summing up the marginal utilities. And it can also be said that total commodity can also be referred to as function of total quantity consumed of X commodity, right? So that is the concept of total utility. To the next term, that is marginal utility. So marginal utility, we understood that this is basically the satisfaction that we get from 1 extra unit. It is basically addition made to the total utility as consumption is increased by 1 more unit of the commodity. And we can also say that it is basically the utility from the last unit consumed of any particular good. बेसिकली लास्ट यूनिट मतलब जैसे मैंने अब यहाँ पे सेकंड से थर्ड यूनिट कंज्यूम किया, सो थर्ड यूनिट विच वाज माय लास्ट यूनिट उससे मेरे को कितनी यूटिलिटी मिली दैट इज व्हाट मार्जिनल यूटिलिटी इज. सो मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड by subtracting the total utility from n units minus total utility from n minus 1 units. For example, here we have this key total utility from 1 unit is 8 and total utility from 2 units is 14. So marginal utility for 2 units, second unit की marginal utility will be total utility from 2 units minus total utility from 1 unit, right? So, for example, the marginal utility for second unit of X, that is simply total utility from 2 units of X minus total utility from 1 unit of X, which will be equal to, so what was the total utility that we derived from 2 units of X? That was nothing but 14. And what was the total utility that we were deriving from 1 unit of X? That was equal to 8. So basically 14 minus 8 is our marginal utility that we derive from 2 units of a commodity X, which is equal to 6. I hope this is clear. You can also try calculating marginal utility
for 4 units. Now, what will be the marginal utility for fourth unit of x? So that will be nothing but total utility from 4 units of x minus total utility from 3 units of x, which is equal to 23 minus 19, which is equal to 4, right? And similarly, we can also calculate total utility. Total utility is nothing but addition of marginal utility. जैसे कि अगर फर्स्ट यूनिट के लिए निकालनी है टोटल यूटिलिटी, मतलब एक ही यूनिट कंज्यूम तो उसके लिए क्या है 8, 2 यूनिट्स के लिए निकालनी है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी 8 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 14. उसी तरह से अगर 3 यूनिट्स के लिए निकालनी है तो 3 यूनिट्स ली तो हर एक यूनिट से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है उसका सम विच इज 8 plus 6 plus 5 which is equal to 19. So that is how we calculate total utility. Now let us understand the relationship between this total utility and marginal utility. So, as the consumer has more of the good, total utility increases less than in proportion and marginal utility gradually declines but is positive. So, what does this mean? Basically, सबसे पहले जो हमें नोटिस करना है वो ये है कि मैं देख रही हूँ कि मेरी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है एक सर्टेन लेवल तक, विच इज कि 8th यूनिट तक मेरी ये इंक्रीज हो रही है एंड देन इट स्टार्ट्स टू फॉल, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. बट जो ये इसमें इंक्रीज आ रहा है टोटल यूटिलिटी में, लेट्स से कि जब मैंने फर्स्ट से सेकेंड यूनिट पे मैंने शिफ्ट किया तो मेरी टोटल यूटिलिटी 8 से 14 हुई, मतलब कि उस एक्स्ट्रा यूनिट से मेरे को जो यूटिलिटी या जो सेटिस्फैक्शन मिली दैट वाज 6, राइट? देन व्हेन आई शिफ्टेड फ्रॉम 2 यूनिट्स टू 3 यूनिट्स, मेरी टोटल यूटिलिटी या मेरी जो सेटिस्फैक्शन 3 यूनिट से थी वो 14 से 19 इंक्रीज हुई. बट जो ये इंक्रीज हुआ दैट इंक्रीज इज ओनली 5. इंक्रीज हुआ दैट इंक्रीज, ये इंक्रीज पहले इतना इंक्रीज, जब वो 1 से 2 पर इंक्रीज हुआ तो सेटिस्फैक्शन कितनी इंक्रीज हुई 6 के इक्वल. उसके बाद जब मैं 14 से 19 पर शिफ्ट हुई तो मेरी सेटिस्फैक्शन कितनी इंक्रीज हुई 5. सो इन अ वे मेरी टोटल यूटिलिटी, मेरी सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो रही है, बट जो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम ए कंज्यूमिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट, that increases less in proportion. I hope this is understood. Then we have the concept of marginal utility. Marginal utility में हम क्या देख रहे हैं कि marginal utility is basically falling, and then it also turns out at a particular level, it also turns out to be negative. So let's move more in depth. So understand this, that when total utility will be maximum, this is known as the saturation point. Marginal utility will be 0, right? So हमारी जब भी टोटल यूटिलिटी इस पॉइंट में देखा जाए तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कौन सी कितने यूनिट्स ऑफ एक्स पर आ रही है, दैट इज एट 8 यूनिट्स ऑफ एक्स, राइट? उस पे हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है एट 29 यूटिल्स और मार्जिनल यूटिलिटी 0 है. सो दिस इज द पॉइंट, basically the point where my total utility will be maximum and my marginal utility will be 0. That point is known as the saturation point, right? And when will this marginal utility turn out to be negative? So this marginal utility will be negative when my total utility will start to fall. तो जब भी मेरी total utility fall करना शुरू करेगी तब मेरी जो marginal utility है that will turn out to be negative, right? Then if consumer is rational, so now the question comes कि हम कितने units of x पर जाकर रुक जाएंगे, हम कब कंज्यूम करना एक कमोडिटी को बंद कर देंगे. सो बेसिकली कहते हैं कि अगर कंज्यूमर रैशनल है तो रैशनल कंज्यूमर कहाँ पे बंद करेगा, जहां पे उसकी यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी सबसे ज्यादा हो और मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो, क्योंकि उसको पता है कि इसके बाद अगर उसने एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम किया सो उस एक्स्ट्रा यूनिट के कंज्यूम करने से जो उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगी दैट विल टर्न आउट टू बी नेगेटिव, राइट? So if a consumer is rational, he will stop at 8 units. This is because if he consumes more than 8 units, then total utility will fall.
and marginal utility will become negative. और जब हमारी marginal utility negative turn out करती है, then we say that the good is giving us disutility. Basically अब हमें satisfaction नहीं मिल रही, अब हमें जो satisfaction मिल रही थी वो भी actually fall करना शुरू होगी. So this is known as disutility. Let's understand this relationship between total utility and marginal utility curves with the help of a figure. So the first thing is that total utility will always start from origin, क्योंकि जब हम कोई यूनिट कंज्यूम ही नहीं कर रहे तो उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी. मेरी सेटिस्फैक्शन उस एक भी यूनिट कंज्यूम करने से मेरी सेटिस्फैक्शन क्या होगी? जीरो. सो दैट इज व्हाई इट विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, देन इट विल इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट. डिक्रीजिंग रेट पे हमने देखा क्यों है डिक्रीजिंग रेट पे, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी मैं अपना एक एक्स्ट्रा यूनिट इंक्रीज करती हूँ तो मेरा जो इंक्रीज आता है टोटल यूटिलिटी में दैट इज लेस इन प्रोपोर्शन. सो दैट इज व्हाई इट विल इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट. एंड देन एक सर्टेन पॉइंट पे आकर जहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, दैट पॉइंट इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट. एंड व्हेन इट विल रीच इट्स मैक्सिमम, आफ्टर दैट टोटल यूटिलिटी विल स्टार्ट टू फॉल. सो आई होप दिस टोटल यूटिलिटी की डायग्राम आपको क्लियर है. ठीक है. देन वी हैव मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप क्या होता है टोटल यूटिलिटी के साथ? जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है एट ए डिक्रीजिंग रेट, उस टाइम पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है बट मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगी. उसके बाद जब टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम पहुंच गई है, उस पॉइंट पर जिसे सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट पर व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी विल बी जीरो. एंड व्हेन द टोटल यूटिलिटी विल स्टार्ट टू फॉल, marginal utility will diminish. It will obviously decrease, but it will turn out to be negative. सो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव कब होगी? जब टोटल यूटिलिटी फॉल करेगी. मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव कब होगी? जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करी है एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम. उस पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी विल बी जीरो एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द सैचुरेशन पॉइंट, right? And also understand this, that as long as total utility curve is concave, marginal utility curve is downward sloping and remains above the x-axis. So in a very layman term, let's understand what is a concave shape and what is a convex shape. Concave shape होता है इस तरह से and convex shape होता है इस तरह से. So in a very layman term, let's take any 2 points on this curve and let's join these 2 points. तो जब हम कोई भी 2 points लेकर उनको join करते हैं, right? If the line segment joining these 2 points, it lies below this curve, then this curve is known as a concave shape. And अगर हमारे पास कॉन्वेक्स शेप है, अगर मैंने कोई भी 2 पॉइंट्स लिए, उन्हें ज्वाइन किया एंड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स लाई अबव दिस कर्व, दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स. सो जब तक हमारी टोटल यूटिलिटी कर्व कॉन्केव शेप है, उस पॉइंट तक, जब तक वो कॉन्केव है उस पॉइंट तक मार्जिनल यूटिलिटी विल फॉल बट इट विल स्टे पॉजिटिव. और जब टोटल यूटिलिटी विल फॉल, ऑब्वियसली मार्जिनल यूटिलिटी विल टर्न आउट टू बी नेगेटिव. ठीक है. When total utility curve is falling, marginal utility curve becomes negative. Falling marginal utility curve shows the law of diminishing marginal utility. We will discuss the next topic of law of diminishing marginal utility in depth. But before moving on, also keep in mind that marginal utility curve is known as the slope of total utility curve. What is a slope? स्लोप होता है कि जब मैंने अपना एक एक्स्ट्रा यूनिट से इंक्रीज किया, ठीक है, किसी भी कमोडिटी का एक एडिशन किया, राइट, उससे मेरी यूटिलिटी में, उस एक्स्ट्रा यूनिट से मेरी यूटिलिटी में कितना चेंज आया, दैट इज व्हाट इट डिपिक्ट्स मार्जिनल यूटिलिटी, एंड उसी को हम कहते हैं स्लोप. Now let's move towards law of diminishing marginal utility, which is again a very important concept. So
The law states that as consumer consumes more and more units of a commodity, marginal utility derived from each successive unit goes on diminishing. A stage comes when marginal utility becomes zero. At this point, total utility becomes maximum. If the consumer consumes beyond this stage, marginal utility becomes negative and total utility falls, as we have seen with the help of a figure as well as with the help of a table. It means that consumer starts getting disutility, that is dissatisfaction, instead of getting satisfaction. Since economists believe that a consumer is a rational being, he wants to maximize his satisfaction. A consumer would not like to go beyond zero marginal utility. Right? So what is law of diminishing marginal utility? It basically refers to the concept that as consumer goes on increasing his units of a particular commodity, so उस हर एक extra addition से उसको जो satisfaction मिल रही है, that satisfaction will go on falling. जैसे कि इसका best example ना हमारे पास होता है water का, कि मेरे को बहुत प्यास लगी थी तो मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, सो उससे मेरे को जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी दैट विल बी वेरी हाई. फिर मेरे को बहुत प्यास लगी थी तो मैंने सेकंड ग्लास लिया वाटर का, उससे अब जो मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलेगी दैट विल एक्चुअली बी लेस देन द सेटिस्फैक्शन दैट आई एम डिराइविंग फ्रॉम द फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर. सो जैसे जैसे मेरा वाटर के ग्लासेस जो है वो इंक्रीज होते रहेंगे, उससे जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी दैट विल एक्चुअली गो ऑन फॉलिंग. और एक पॉइंट आएगा जब मैं पानी बंद कर दूंगी पीना. कौन से पॉइंट पर पानी बंद हो जाएगा पीना? कहते एक रैशनल कंज्यूमर उस पॉइंट पर बंद कर देगा जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी, क्योंकि जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी तो मुझे नहीं चाहिए. इसलिए देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस लॉ. एक्सेप्शन का मतलब होता है वेयर दिस लॉ फेल्स, वेयर दिस लॉ इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल. मतलब जो हमने इस लॉ के बारे में पढ़ा वो अप्लाई नहीं होगा कुछ कई जगह पर. सो द फर्स्ट पॉइंट वेयर दिस इज फेलिंग दैट इज क्यूरियस और रेयर थिंग्स. जैसे कि किसी पर्सन को पसंद है कॉइन्स कलेक्ट करना, ठीक है, कोई रेयर कॉइन्स कलेक्ट करना, तो वो जैसे जैसे उसे अलग अलग कॉइन्स मिलेंगे तो कॉइन्स उसके पास इंक्रीज हो रहे हैं, राइट. बट जो वो इंक्रीज आया उसके पास कॉइन्स में, उसके कारण उसकी यूटिलिटी यहाँ पे फॉल नहीं कर रही, उसकी यूटिलिटी तो एक्चुअली इंक्रीज कर रही है फ्रॉम एवरी एडिशनल कॉइन, राइट. देन नेक्स्ट इज माइजर्स. माइजर्स कौन होते हैं? माइजर्स बेसिकली कंजूस लोगों को कहते हैं. कंजूस भी नहीं, जो मतलब बेसिकली पैसे स्पेंड नहीं करते, ठीक है. So those are known as misers. So misers obviously ज्यादा से ज्यादा स्टॉक ऑफ मनी अपने पास रखते हैं. So हर एक्स्ट्रा नोट से उनकी बेसिकली सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो रही है. So again हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे फेल हो रहा है. Then third is a good book or a poem. कोई पोएम बहुत अच्छी लगती है, जितनी मर्जी बार पढ़ो हमारी सेटिस्फैक्शन इंक्रीज ही होगी, फॉल नहीं होगी उस बुक से या उस पोएम से. ड्रंकर्ड्स की बारे, एडिक्ट्स के बारे में बात करें तो एडिक्ट्स भी क्या होंगे, उनको हर एक्स्ट्रा बॉटल से बेसिकली जो उन्हें यूटिलिटी, जो उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगी दैट विल ऑब्वियसली इंक्रीज. एंड देन वी हैव हॉबीज. लेट्स से कि मेरी हॉबी है स्टैम्प कलेक्ट करना. सो जैसे जैसे मैं अपने स्टैम्प्स को कलेक्ट करूंगी तो हर एक्स्ट्रा स्टैम्प से मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी, मुझे जो खुशी होगी वो इंक्रीज होगी, राइट. So these are some of the exceptions where this law does not hold. So this is also an important question from exam point of view. Then there are some assumptions to law of diminishing marginal utility. पहली assumption है कि हमारे पास standard unit of measurement है, मतलब हम utils में उसको measure करेंगे, right. Then we have a homogeneous commodity. हमारे पास commodity homogeneous होनी चाहिए, हमारे पास same commodity के ऊपर ही हम same commodity को basically consume कर रहे हैं, उसका size same होगा, उसका taste same होगा, कोई change नहीं आएगा. Then we have continuous consumption, और हम एक ही बार में consume कर रहे हैं. ऐसे नहीं है कि मैं अगर glass of water की बात करें तो पहला glass of water मैंने दिन में पिया और फिर मैंने दोपहर को पिया और मैंने कहा ये तो एक एक्सेप्शन हो गया. नो, दैट इज नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट. हम एक ही बार में कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहे हैं. एंड फोर्थ इज मेंटल एंड सोशल कंडीशन ऑफ कंज्यूमर मस्ट बी नॉर्मल.
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, कंज्यूमर को कोई भी मेंटली अनस्टेबल बेसिकली कंज्यूमर नहीं है. स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर मूविंग टूवर्ड्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. But before moving towards consumer equilibrium and before studying about assumptions of utility approach, we need to understand that the two approaches which are essential to study consumer behavior and equilibrium are cardinal and ordinal approaches. So, what is a cardinal approach and what is an ordinal approach? Let us understand that in depth before moving towards the assumption of a utility approach, which is also referred to as Marshall approach, basically refers to the approach in which utility can be measured in numbers. Basically, we can measure it as 1 util, 2 utils, 3 utils की हर यूनिट से हमें जो यूटिलिटी मिल रही है उसे हम नंबर्स के बेसिस पे मेजर कर सकते हैं. जैसे कि अगर मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर पिया तो उससे मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिली, आई कैन से कि मेरे को 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली, राइट. एंड देन मैंने 2 ग्लास पिए तो मुझे उससे जो सेटिस्फैक्शन, टोटल सेटिस्फैक्शन जो मुझे मिली, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू लेट्स से 36 यूटिल. सो उस तरह मैं उसे नंबर्स के बेसिस पे मेजर कर सकती हूँ. बट ऑर्डिनल approach, which is also known as Hicks and Allen approach, now this is also very important. सो हिक्स एंड एलन अप्रोच क्या कहती थी? इसमें कहते कि हम लोग यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, हम लोग ऐसे नंबर्स के बेसिस पे नहीं कह सकते. मैं अपनी सेटिस्फैक्शन को बेसिकली मेजर नहीं कर सकती. मैं नहीं कह सकती कि एक ग्लास से मेरे को इतने यूटिल्स मिले, सेकेंड ग्लास से मेरे को इतने यूटिल्स मिले. वी कांट मेजर इट, बट हम रैंकिंग जरूर कह सकते हैं, रैंकिंग दे सकते हैं कि मेरे को एक ग्लास से जो यूटिलिटी मिली दैट इज मोर देन द यूटिलिटी जो मुझे सेकंड ग्लास से मिलेगी. सो उस तरह वी कैन रैंक देम बट वी कांट मेजर आवर सेटिस्फैक्शन. बेसिकली दैट इज व्हाट ऑर्डिनल अप्रोच और हिक्स एंड एलन अप्रोच स्टेटेड. सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स यूटिलिटी अप्रोच की assumptions पे, राइट. सो assumptions में सबसे पहले हमारे पास क्या है? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की हम लोग बात करेंगे. एंड कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की जो assumptions हैं, फर्स्ट assumption इज दैट एग्जैक्टली जो कार्डिनल कहता है कि यूटिलिटी मेजर कर सकते हैं, दैट इज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एग्जैक्ट यूनिट्स. यूटिलिटी इज मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स. सेकेंड assumption इज कंज्यूमर्स इनकम इज गिवन. हमारे पास इनकम गिवन है, कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं हो रही. लेट्स से कि अगर एक पर्सन 100 रुपीज अर्न करता है तो उस 100 रुपीज को स्पेंड करके एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे उसको कितनी यूटिलिटी मिलेगी, दैट इज व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग हियर. ठीक है, तो उसकी इनकम चेंज नहीं होगी, उसकी इनकम पर्टिकुलर इनकम गिवन है. प्राइजेस ऑफ कमोडिटी आर गिवन एंड रिमेन कांस्टेंट. उसी तरह प्राइजेस भी कमोडिटीज के चेंज नहीं करेंगे, सेम प्राइजेस थ्रू आउट इस अप्रोच में रहेंगे. एंड फोर्थ पॉइंट इज कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. This basically means that utility from every unit of money will remain unchanged for the consumer. This means कि अगर उसने मतलब हर एडिशनल यूनिट ऑफ मनी से जो उस कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलती है वो सेम है. मतलब अगर उसके पास एक और नोट आया तो एक और नोट आने से उसकी जो सेटिस्फैक्शन इंक्रीज नहीं करेगी या डिक्रीज नहीं करेगी, उसकी सेटिस्फैक्शन सेम रहेगी जो उससे पहले उसको मिल रही थी. मतलब मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली कांस्टेंट रहती है. Now let us move towards the last topic, which is the most important topic, which is consumers equilibrium. So what is a consumer? Consumer होता है जो goods and services को purchase करता है, और equilibrium basically उस position को कहते हैं जिस position से consumer अब move नहीं करना चाहेगा. So ऐसी कौन सी position है जिसके बाद basically consumer और goods and services को purchase नहीं करना चाहेगा? वो कंडीशन होती है जहां पर उसकी बेसिकली सेटिस्फैक्शन जो है वो मैक्सिमम है, राइट. सो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फैक्शन गिवन इनकम एंड प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज. So under consumer equilibrium, we will do two cases. The first case is a single commodity case or one commodity case, जिसमें हम एक single good की बात करते हैं.
इसकी assumptions are same as law of diminishing marginal utility की assumptions. एंड इस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होगा जब उसे एक पर्टिकुलर कमोडिटी से एक्स, उस पर्टिकुलर कमोडिटी एक्स से जो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, विच मींस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स. Right? So consumer is in equilibrium when he satisfies the following condition, where marginal utility of good X is equal to price of the product. The total gain decreases with additional purchase after an equilibrium, and when he has attained this equilibrium, अगर उसके बाद वो कोई additional purchase करेगा तो उसको जो टोटल गेन या जो उसको टोटल सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो डिक्रीज होगी. ऑब्वियसली अगर उसकी सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो रही होती तो वो क्यों उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको इक्विलिब्रियम तो कह ही नहीं सकते थे हम लोग, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि उसकी सेटिस्फैक्शन जो है वो मैक्सिमम नहीं हुई उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसको और एडिशनल यूनिट से वो अपनी सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज कर सकता था. इसलिए इक्विलिब्रियम के बाद जो उसको टोटल गेन होगा दैट विल फॉल. Now let us understand this concept with the help of a table. Let's say that I have X commodity and units of this good consumed are given as 1, 2, 3, 4, 5. Then I am given with the marginal utility of X and I am given the price, because we have done in the assumptions that price will remain constant. So we have taken same price which is equal to 5 throughout, right? And we have taken marginal utility of X as this, which is always diminishing, because we are assuming that law of diminishing marginal utility will hold in this case, right? So when the consumer is consuming 1 unit of X, marginal utility जो उसको मिल रही है that is 8. When he is consuming 2 units of X, तो उससे additional जो उसको utility मिली that is equal to 6. वैसे ही 3 units of X कंज्यूम करने से एडिशनल जो सेटिस्फैक्शन मिली फ्रॉम थर्ड यूनिट दैट इज 5. उसी तरह से ये चलता जाएगा. 4 units of X से उसको जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिली फ्रॉम दिस एडिशनल यूनिट ऑफ X दैट इज 4. एंड वैसे ही 5 units of X से जो फिफ्थ यूनिट से जो उसे सेटिस्फैक्शन मिली दैट इज 3. सो given that utility is cardinal concept, marginal utility from different units of good X can be measured in terms of money. Because this is a cardinal concept, इसलिए हम लोग इसे money monetary terms में express कर सकते हैं basically. So let's assume कि price of X 5 है, ठीक है. तो जब उसका प्राइस ऑफ X 5 है और हमारे पास सिंगल कमोडिटी केस क्या कहता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम X विल बी इक्वल टू प्राइस ऑफ X. सो इन दिस केस प्राइस ऑफ X 5 है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X जो है दैट इज ऑल्सो 5. सो दिस इज माई पॉइंट वेयर माई कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम. इज दिस क्लियर? इसके बाद अगर वो मूव करेगा तो उससे क्या होगा, उस केस में उसको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी, सेटिस्फैक्शन कम मिलेगी, बट जो प्राइस वो पे कर रहा है दैट इज मोर एक्चुअली. और इस पॉइंट से ऊपर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर क्या होगा कि उसे जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो ज्यादा है और जो वो प्राइस पे कर रहा है टू गेट दैट सेटिस्फैक्शन इज लो. सो ऑब्वियसली जब मुझे किसी चीज से सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रही है बट मुझे उसका कम प्राइस पे करना पड़ रहा है, तो आई विल ऑब्वियसली इंक्रीज माई कंजम्पशन, राइट. एंड अगर मेरे को सेटिस्फैक्शन कम मिल रही है बट मेरा प्राइस ज्यादा पे करना पड़ रहा है, सो आई विल नॉट कंज्यूम. सो referring to this, we have this two cases, we can have two cases. So if the consumer buys less than 3 units, say 2 units, then the marginal utility or the satisfaction he derives from 2 units is 6, right? And the price that he pays is only 5, which means that marginal utility from X is more than price of X. So therefore he will buy more. In other words, since price is less, he buys more, which is logical basis of law of demand, right? So जब उसका marginal utility from X is more than price from X, है ना, तो उससे क्या होगा, वो ज्यादा कंज्यूम करेगा. और जब वो ज्यादा कंज्यूम करेगा, then law of diminishing marginal utility will start following
it will then law of diminishing marginal utility will start, right? और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जब अप्लाई होगा, उससे जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स दैट विल फॉल, and it will fall and it will fall until we reach to the level of 5, which is attained at 3 units of. Is this clear? Similarly, now we have this question कि consumer क्या है, वो 3 units of x से ज्यादा क्यों नहीं बाय करेगा? We have done this क्योंकि 3 units of x से उसको जो प्राइस पे करना पड़ रहा है that is 5, which is more than जो satisfaction उसको gain होगी, which is equal to 4. So this is because if he buys 4 units of x, then the price he pays is rupees 5, which will be more than marginal utility he derives, which is worth rupees 4. Right? So right? So these two cases are very important कि अगर उसकी marginal utility price of x से ज्यादा होगी, मतलब satisfaction उसकी ज्यादा है than the price he pays, तो वो ज्यादा consume करेगा, जिसके बाद law of diminishing marginal utility हमारी apply होगी, and as a result हमारी जो marginal utility है that will start to fall, and it will fall until, और हम कहाँ जाके रुकेंगे, जब marginal utility from x will be equal to price of x. सिमिलरली अगर हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन प्राइस ऑफ एक्स, तो वो अपनी कंजम्पशन को रिड्यूस करेगा, और कंजम्पशन को रिड्यूस करने से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अगेन अप्लाई होगा, और उससे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी अब इंक्रीज होगी क्योंकि उसने कंजम्पशन को रिड्यूस कर दिया है, राइट? Then, therefore, we can also understand this single commodity case with the help of a diagram. So, consumer's equilibrium condition is geometrically illustrated in this figure, where we have taken price and utility on y-axis and the quantity of a commodity on x-axis. Marginal utility हमने देखा है कि ये हमेशा decreasing ही होगी, right, until it turns to negative. So, ऐसे ये diminishing curve है. And price, we have noticed that it is what? Price is taken to be constant at let's say 5. So हमारे पास जहां पे ये दोनों equal है, this equality depicts that this is the quantity of X commodity where the consumer will stop. Basically जहां पर ये दोनों equal है, this is my consumer's equilibrium point. This E is a consumer equilibrium point, because here my marginal utility of x and my price of x, they both are coming out to be equal. Now let us take this case. Let's say this is Q1. ठीक है, so इस Q1 level पर क्या हो रहा है? Q1 level पर मेरी जो marginal utility है, marginal utility क्या है? ये पूरी की पूरी मेरी marginal utility है, right? और मेरा price of x क्या है? This much is the price. Basically, मेरी जो satisfaction मेरे को मिल रही है, that satisfaction is this entire region, और उस satisfaction के लिए मेरे को जो price मिल रहा है, that is this. So as a result, मैं अपनी quantity of x को increase करूंगी, and this will continue to increase until I am at this level Q, where my marginal utility from x is equal to price of x. उसी तरह से, let's take another case, right? Where let's say कि I am sitting on this point Q2. तो इस point Q2 पे बैठने से मेरे पास जो प्राइस मेरे को पे करना पड़ रहा है इस क्वांटिटी के लिए, that is equal to this entire region, right? So the price that I am paying, this is my price that I have to pay for the commodity. और मुझे जो satisfaction मिल रही है इस केस में, that is just this amount. मतलब मेरे को प्राइस ज्यादा पे करना पड़ रहा है, इतना प्राइस as compared to जो मुझे satisfaction derive हो रही है from this level. So obviously I will reduce my quantity of consumed, and I will reduce it until I am back to this Q level where my marginal utility from X is equal to price of X. I hope this is clear, and I hope single commodity case की major condition जो है that is clear कि ये तब तक consumer equilibrium इस केस में कहाँ होगा single commodity के केस में, जब उसकी जो marginal utility from X that is equal to price of X, right? Then second case, which is our two commodity case, and this is also known as law of equimarginal utility. In layman terms, two commodity case basically means that we are considering two goods, say X and Y. ठीक है,
और मुझे जो satisfaction commodity good X से मिल रही है and the satisfaction that I am getting from good Y, that should basically be equal to each other when I am consuming them. Basically let's say कि मैं एक गेम खेल रही हूँ, मैं दो गेम्स खेल रही हूँ, ठीक है, फुटबॉल और क्रिकेट, तो मुझे जो satisfaction फुटबॉल से मिलनी चाहिए and the satisfaction that I am deriving from playing cricket, that should be equal to each other. That is what two commodity case is all about. So basically we have seen कि अगर सिंगल कमोडिटी केस में लें, ठीक है, लेट्स से दैट वी आर टॉकिंग अबाउट गुड एक्स, तो उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, राइट? सिमिलरली अगर हम गुड वाई की बात करें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा? व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम वाई दैट इज इक्वल टू प्राइस फ्रॉम वाई, राइट? अगर हम इन दोनों कंडीशंस को 1 and 2 को if we divide these two equations, we will get marginal utility of x upon marginal utility of y, which is equal to price of x upon price of y. Now so this is the condition for consumer's equilibrium in a two commodity case, which is nothing but marginal utility of x divided by marginal utility of y should be equal to price of x upon price of y. So the law states that a consumer will allocate his expenditure so that utility gained from last rupee spent on each commodity is equal. Basically जो उसने यूटिलिटी उसको एक्स कमोडिटी से मिल रही है and the utility that he is deriving from y commodity, that should be equal. Satisfaction from x and satisfaction from y should be equal to each other. And also this same thing can also be written as utility of x upon price of x is equal to marginal utility of y upon price of y, where this represents the satisfaction that a consumer is getting from good x and this represents the satisfaction from good y, right? So in other words, a consumer buys each commodity up to the point at which marginal utility per rupee. So when we are dividing marginal utility with price, basically that means marginal utility from 1 rupee, right? So marginal utility per rupee spent on it is same as marginal utility of rupee spent on another good. When this condition is met, a consumer cannot shift a rupee of expenditure from one commodity to another and increases utility. So this basically is my consumer's equilibrium condition. Understand this with the help of a figure, right? So in this case, we have taken y-axis on this side and another y-axis on this side, right? So first is representing my marginal utility per rupee for good x and second is my marginal utility per rupee for good y, right? So marginal utility, if we are taking it in this form, for good x it will be like this downward sloping, but जब हम इस साइड पर उसकी कर्व लेंगे, बेसिकली वी हैव फ्लिप्ड दिस एक्सिस. सो मैं जब उसको फ्लिप करूंगी एक तरह से एक्सिस को फॉर गुड वाई, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जो फॉल कर रही है बट वो फॉल इस डायरेक्शन में ऐसे करेगी, राइट? सो द पॉइंट वेयर दीज बोथ आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर, right? So this point where they both are intersecting with each other, this point is known as my equilibrium condition in case of two commodities, right? Now let us understand the case where the consumer is, let's say, on point T and another point, let's say consumer is sitting on point S. So when the consumer is below, like when the consumer is sitting on point T, उस केस में उसे जो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स गुड से मिल रही है वो किसके इक्वल है? दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी दैट ही इज गेनिंग फ्रॉम गुड एक्स and when he and the marginal utility that he is gaining from good y is this. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो उसको मार्जिनल यूटिलिटी एक्स गुड से मिल रही है, मतलब उसे जो सेटिस्फैक्शन एक्स गुड से मिल रही है, दैट इज मोर देन द सेटिस्फैक्शन जो उसे वाई कमोडिटी से मिल रही है. सो ऑब्वियसली जब उसे सेटिस्फैक्शन एक्स गुड से ज्यादा मिल रही है, वाई से कम मिल रही है, तो वो क्या करेगा? वो अपनी
एक्स गुड की कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा, वाई गुड की कंजम्पशन को रिड्यूस करेगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई करेगा, एंड इट विल कंटिन्यू until the consumer is on point M, which is our consumer's equilibrium. And this is what we have written here. What happens when MUX upon PX is not equal to MUY upon PY? मतलब हमारी जो equilibrium condition है in two commodity case, that is not met. They both are not equal to each other. So let's take case one where MUX upon PX is more than MUY upon PY. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसे जो satisfaction X से मिल रही है, that is more than satisfaction that the consumer is deriving from good Y. So obviously वो क्या करेगा, क्योंकि उसे satisfaction ज्यादा मिल रही है X से, so अपनी X की consumption increase करेगा, Y की consumption को reduce करेगा. But when he will reduce, law of diminishing marginal utility will apply, and as a result X से जो satisfaction उसकी मिल रही है वो fall करेगी, Y से जो satisfaction है वो increase करेगी, and it will continue until they both will be back and equal to each other. So in this case, consumer is getting more marginal utility per rupee in case of good X as compared to Y. Therefore, he will buy more of X and less of Y. This will lead to fall in MUX and rise in MUY. Why? What is the reason behind this? Law of diminishing marginal utility. The consumer will continue to buy more units of X until marginal utility of X is equal to marginal utility of Y. Right? And now let's take another case. Let's where marginal utility of Y upon price of Y is more than marginal utility of X upon price of X, which means that satisfaction that a consumer is getting from Y good is more than the satisfaction that he will get from X good. So उस केस में क्या होगा? We know that उस केस में हमारे पास कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फैक्शन Y से मिल रही है, थोड़ी सेटिस्फैक्शन मिल रही है X से. So he will, as a result, increase his consumption of Y, reduce his consumption of X. Law of diminishing marginal utility apply होगा, and it will continue until marginal utility of X and marginal utility of Y are equal to each other. I hope this is clear to all. And we end today's session. Let us discuss some MCQs. So the first MCQ is the concept of utility is associated with realized satisfaction, expected satisfaction, or none of the above. Obviously, as we have seen that it is associated with the concept of realized satisfaction. Realized satisfaction meant that satisfaction which the consumer gains after consuming a commodity. In marginal utility theory, utility is a cardinal approach, ordinal approach, both cardinal and ordinal, or none of the above. As we have discussed that it is a cardinal approach. As the consumer has more units of a commodity, his total utility from the commodity increases less than in proportion, reaches a maximum and then falls. Increases less than in proportion and then falls. Increases more than in proportion and then reaches a maximum, falls, becomes zero and then negative. So because it is associated with total utility, we have seen that it will increase less than in proportion, will reach a maximum, and then it will start to fall. And the point where total utility is maximum, marginal utility is zero, and this point is known as the saturation point. When this question is, when marginal utility of a commodity is zero, slope of total utility curve is obviously zero. क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि स्लोप जो है टोटल यूटिलिटी कर्व का, दैट इज बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी. सो because marginal utility is zero, it means that slope of total utility is zero. And last question for the day, by spending his entire income only on two goods X and Y, a consumer finds that marginal utility of X per rupee is greater than marginal utility of Y per rupee. So in this case, how will the consumer react? So this basically means that satisfaction that a consumer is getting from X is more than satisfaction from Y. So obviously he will increase his X and reduce his Y
and law of diminishing marginal utility will apply until they both are equal to each other. So which option states this? Reduce consumption of X and increase consumption of Y? No. Increase consumption of X and reduce consumption of Y. This does satisfy our condition. Increase consumption of X and no change in consumption of Y? Again, no. And last is also a no. So B will be the correct option here. So this was all I wanted to do about related to consumers equilibrium. I hope this was useful to you. And if it was, please like, comment, and share. Thank you so much.